Maxima minima and point of inflection, maximum and minimum value of a function, if at a point C belonging to A comma B, FC exists, then FC is called a local maximum value at point C if FC is greater than Fx for all x belonging to open interval C minus delta and C plus delta. See, this is our point. Let us say this is our point A and this is our point B. Now, this is the point, rather let me take a different color. This is the point C. This is the point C plus delta. This is the point C minus delta. Within this range, C minus delta and C plus delta, the function has a value, has a highest value at this point. See, the function within this much point, it has the highest value here. It has the highest value here. So this is called a local maximum value of the function, and the point C is called local maxima. It's called local maxima, and the point C and the point C is called local maxima. देखो ये एक पॉइंट सी है. लेट अस अंडरस्टैंड अगेन. इसको फिर से समझते हैं. ये पॉइंट मेरा सी है, ये पॉइंट मेरा सी है, और यहाँ पे है सी प्लस डेल्टा थोड़ा सा ज्यादा, सी से थोड़ा सा ज्यादा, और सी माइनस डेल्टा सी से थोड़ा सा कम. इसके बीच में फंक्शन की हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है. ये पूरा लाइन देखो और ये पूरा लाइन देखो, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है फंक्शन की वैल्यू. यहाँ पे सबसे ज्यादा है फंक्शन की वैल्यू. तो ये वो इस वैल्यू को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा. इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन. And this is the point A and B. This is the point A and B. These are the points A and B. Now, if I change this, if I write this way, now let us understand the next thing. Here, let me write it here. FC is called a local minimum, value at point C if FC is less than Fx for all x belonging to C open interval C minus delta and C plus delta, and the point C is called, and the point, wait a minute, and the point C is called local minima. In the figure, this is the point C. This is little more than C. This is little more than C. This point is little more than C, and this point is C plus delta, and this point is say C minus delta. If you see in this portion and in this region, this is the point where
this is the least value of the function within this portion, within this much area, within this much part of the curve. The value of the function is least here. If you check this much portion and this much portion, the value of the function is least here. So this is known as the local minimum value, and this point is called the local minima. This point is called the local minima. मतलब इधर देखो, इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, this point C, this point C, and this much portion of the curve, and ये जो छोटा सा portion of the curve है, यहाँ पे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू है, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है फंक्शन की, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा. इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा विद इन दिस मच पार्ट, within this much part. Now see, now we will understand what is global maximum and global minimum. Now the point is of global maximum and global minimum, that is let me write down, FC is called global or absolute. This is nowadays used, absolute maximum value, just a minute, maximum value and the point C is called global, just a minute, is called global maxima, just a minute, maxima if FC is greater than Fx for all x belonging to A comma B. This A comma B. Let us understand this thing in the picture. Now you see, let me rub all this stuff, and let me rub this also. Now I have this point C. Now here the value of the function is the most. If you see here, if you compare with here, you compare anywhere, this point, at this point, the function has the maximum value throughout this interval AB. Throughout this interval AB, the function has the maximum value here at this point. Let me again clearly write it. At this point, the function has maximum value. If you compare the whole graph, if you compare this whole graph, the function has the maximum value, and this is the point Z. So this is called the global maxima, and this value and the value of the function here is called the global maximum value or absolute maximum value. Here देखो, ये जो पॉइंट C है, एक सेकेंड, लेट्स रब अगेन. ये जो पॉइंट C है, यहाँ पे फंक्शन, इस ग्राफ में, यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है पूरे ग्राफ में. कंपेयर करके देखो, पूरे ग्राफ में कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है. तो इसको बोलते हैं ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को बोलते हैं ग्लोबल या ग्लोबल मैक्सिमा. इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल मिनिमा. जस्ट राइट दिस डेफिनेशन इन another manner. FC is called global, just a minute, let me, I think I messed up the spelling here.
Yes, global or absolute minimum value, sorry, absolute minimum value, and the point C, and the point, I spoke point, but I forgot to write this point here. Point C is called global minima if FC is less than Fx for all x belonging to A comma B. This is the point C. Now at this point the function has the least value. At this point the function has the least value. Here it is the least of all. From this side you compare, from this whole side you compare. This has the least value at this point of the function. This is known as the global minimum value of the function, and this point at that time is called the global minima. देखो पूरे इस फंक्शन में इस पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है। चारों तरफ चाहे देख लो चाहे सबसे कम है। इस यहां की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं, फंक्शन की जो वैल्यू यहां पे है, मतलब जस्ट अ मिनट, मतलब यहां पे जो वैल्यू है फंक्शन की, यहां पे ये जो वैल्यू है फंक्शन की यहां पे, इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। और इस ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं इस वैल्यू को, फंक्शन के इस ग्राफ के यहाँ पे। और इस पॉइंट सी को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम। the function just a minute, the function f is said to have an extreme value at point C if FC is either a maximum value or a minimum value. The point C is called the stationary point. Stationary point.